हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू टेस्टबुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है माधव अरोड़ा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज का जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, कीपिंग इन माइंड योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, चाहे फिर वो आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 हो या फेज 2 हो 2024 का, या फिर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन के लिए, ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन ये है कि सर इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उस पर बात कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन में, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और करंट अफेयर्स की अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो करंट अफेयर्स जो पूछे जाते हैं हर साल, वो हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। अगर मैं आपसे कहूं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो मैं डिवाइड कर सकता हूं करंट अफेयर्स को तीन बड़ी कैटेगरीज में। एक को हम कहते हैं जनरल करंट अफेयर्स, जो कि ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं आपके फेज 1 एग्जामिनेशन में। उसके बाद है आपके जो करंट अफेयर्स, दैट इज ईएसआई बेस्ड करंट अफेयर्स, जिसमें इंपॉर्टेंट स्कीम्स और उसके साथ साथ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस पे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और आखिरी में अगर हम बात करें तो हमारे पास है फाइनेंस बेस्ड करंट अफेयर्स। और अगर हम फाइनेंस बेस्ड करंट अफेयर्स की बात करें तो दो कैटेगरीज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक है जनरल फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे कि आपके बैंकिंग सेक्टर से, इंश्योरेंस सेक्टर से, या फिर सेबी रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, वो सारा एरिया, फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड अपडेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगला जो पार्ट है दैट इज आरबीआई अपडेट, जिसमें आरबीआई की नोटिफिकेशंस हैं, आरबीआई के सर्कुलर्स हैं, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट्स हैं एंड मेनी मोर। तो इन्हीं सारे करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए टेस्टबुक आपके लिए लाया है एक सीरीज, जो कि लाइव होगी एवरीडे एट 6 PM मंडे टू सैटरडे। पीआईबी, वीकली पीआईबी कवर होगा आपका मंडे को। उसके बाद वीकली फाइनेंस कवर होगा ट्यूसडे को। वीकली आरबीआई अपडेट्स कवर की जाएंगी वेंसडे को। गवर्नमेंट स्कीम्स थर्सडे को। ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर्स फ्राइडे को। और जो आपकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो कवर की जाएंगी सैटरडे को। तो मंडे टू सैटरडे एट 6 PM आपको जरूर जुड़ना है टेस्टबुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि आप अपने करंट अफेयर्स को बेटर वे में, सही डायरेक्शन में, सही कंटेंट के साथ प्रिपेयर कर पाएं और अपने एग्जामिनेशन को फॉर श्योर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएं। सो बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या मैं ऑडिबल हूं, विजिबल हूं, एवरीथिंग इज फाइन, वी आर गुड टू गो, so that we can start the discussion without any further delay. एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या मैं ऑडिबल हूं, विजिबल हूं, so that we can start the discussion without any further delay for your upcoming regulatory body exams. चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली न्यूज से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली जो न्यूज है रिलेटेड टू द फाइनेंस वर्ल्ड, उस पर जंप करने से पहले, जब भी कभी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, फॉर दैट रीजन आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, एक बात आपको याद रखना होगा या याद रखनी होगी, दैट इज यू मस्ट नेवर क्विट। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। काफी ब्यूटिफुली ये प्रिसाइजली बताया गया है। वो क्या कि सर अगर विनर्स की बात करें तो विनर्स दे नेवर क्विट एंड क्विटर्स दे नेवर विन। इफ यू वांट टू विन, you cannot think of quitting. You need to give your 100% on regular basis. And if you are a quitter, remember that you are not going to succeed in the upcoming future. So if you want to win, you cannot quit. If you are quitting, you cannot win. That is very well said by one of the individual. चलिए, तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, आई होप मैं ऑडिबल हूं, विजिबल हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वर्ल्ड बैंक अप्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 7% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25। फाइनेंशियल ईयर 25 का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर 2024-25, which means I'm talking about the financial year from 1st April 2024 to 31st March 2025.
जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया दैट आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी न्यूज, कीपिंग इन माइंड दैट आई हैव the students who are attending my session for the very first time, so I'll not take or I'll not come with any pre-request कि आपको हर चीज पता होगी. I'll try my level best to explain you each and every point from basic till advanced, so that आपके basic concepts तो clear हो ही और उसके साथ साथ आपके जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स है वो भी क्लियर हो और अपने एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाए. चलिए, तो वर्ल्ड बैंक अप्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 7%. इसका मतलब क्या सर? जब भी कभी हम जीडीपी की बात करते हैं, व्हाट इज जीडीपी सर? जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एक्चुअली व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सर? इट इज द वैल्यू, और आई वुड से द फाइनल वैल्यू और द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced and provided within the geographical boundaries of the country. So within the geographical boundaries of the country, एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई उनकी वैल्यू का सम क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है. और जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट का मतलब क्या सर? जीडीपी ग्रोथ का मतलब है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर. अगर मान लेते हैं 2023-24 में इंडिया की जीडीपी थी 100 और नेक्स्ट ईयर 2024-25 में वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस जीडीपी इज गोइंग टू बी ₹120. तो इंडिया की जीडीपी में कितना इंक्रीज हुआ? 20. किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में. तो कितने परसेंट का जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट है सर? दैट इज 20%. सो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स. अब जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स कौन देता है सर? जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स दिए जाते हैं बाय द नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आरबीआई, नीति आयोग एंड मेनी अदर, along with that by the international organizations like World Bank, IMF, Asian Development Bank and many more. तो regular basis पर, on regular basis we come across with different GDP growth estimates given by different organizations. तो recently इस वीक की न्यूज में वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट दिया है क्या कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है या जीडीपी फोरकास्ट है फॉर द इंडियन इकोनॉमी, उसे इंक्रीज किया गया कितना? 7%, जो कि पहले एस्टिमेट किया गया था कितना? 6.6%. तो सीधा सीधा जो डायरेक्ट क्वेश्चन फेज 1 में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन क्या होगा? फेज 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है वो ये है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडियन इकोनॉमी? तो उसके लिए आपका आंसर क्या होगा सर? इट्स 7%. अगर एग्जामिनर वांट्स टू प्ले विद यू तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि सर अगर 7% एस्टिमेट इस बार का है तो लास्ट टाइम जो एस्टिमेट था या अर्लियर एस्टिमेट था वो कितना था? दैट इज 6.6%. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वर्ल्ड बैंक ने अगर इसे रिवाइज किया और एस्टिमेट को इंक्रीज किया तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा. वो रीजन, वो लॉजिक क्या है तो उसको भी देख लेते हैं. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ था या इंडिया की जो जीडीपी वैल्यू थी, जो ग्रोथ हुई थी एक क्वार्टर में, दैट इज अप्रैल मई जून, दैट इज अप्रैल टू जून क्वार्टर, वो कितनी थी? दैट वाज 6.7%. स्टिल वर्ल्ड बैंक ने कहा कि नहीं सर, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए चारों क्वार्टर्स को मिलाकर ये वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी अराउंड 7%. अब क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से 7% ग्रोथ एस्टिमेट किया गया सर? उसके दो रीजंस हैं. पहला रीजन है एग्रीकल्चर रिकवरी एंड रूरल डिमांड. The upward revision in the largely driven by a recovery in agriculture sector and increase in rural demand. तो रूरल एरियाज में पब्लिक डिमांड इंक्रीज हो रही है. अब डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सा रूल है इकोनॉमी का, जब भी कभी डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई को अगर आप बढ़ाएंगे तो एंड ऑफ द डे क्या बढ़ेगा? आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन जीडीपी. इट्स क्वाइट ऑब्वियस. Second point is government spending. Government has increased its spending on infrastructure sector. Now, if government has increased its spending on infrastructure sector, it will undoubtedly boost up the production in the country, not only in terms of construction or building up of that infrastructure, but after that infrastructure is built, that infrastructure will be utilized for easy transportation, for easy access, for easy I would say
transfer of goods and services, which will undoubtedly enhance the country's production level in the near future. तो एक तो हुआ गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है वो आज आपकी कंट्री में जीडीपी को इंक्रीज कर रहा है, और सेकेंडली जो एग्रीकल्चर रिकवरी इंक्रीज हुई है प्लस जो रूरल एरियाज में डिमांड इंक्रीज हुई है उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने रिवाइज किया है इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट को, और रिवाइज करके 6.6% से इंक्रीज करके कितना कर दिया सर? इट हैज नाउ बीन इंक्रीज्ड टू 7%. It has now been increased to 7%. क्लियर? चलिए अगला पॉइंट आता है कि सर अभी हमारे इकोनॉमी का जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है वो तो इंक्रीज हुआ, बट स्टिल आवर इकोनॉमी इज फेसिंग सर्टेन इश्यूज. व्हाट आर दोज इश्यूज? फर्स्ट वन, इंडिया इज फेसिंग हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स डिस्पाइट ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ रेट, डिस्पाइट ऑफ increasing growth rate, India is still facing a high average unemployment rate of 17%. It is a point of worry. याद रखिएगा ये जो डेटाज मैं आपको दे रहा हूं ये डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एज वेल. फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन दैट इंडिया is recording high growth rate, or for that reason India is one of the fastest growing economies out of the large economies all over the globe. Still unemployment rate is high in India. What are the reasons? So when you will be writing a question to express the reasons, in order to support your answer you must give the figures that according to World Bank latest forecast, unemployment rate in India on an average is 17%. And if I talk about the midterm growth, the World Bank projects that India's midterm economic growth will average 6.7% over the next 2 financial years, with a gradual increase in the private investment expected to aid in consumption recovery. तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं. पहली प्रॉब्लम तो सर अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरी प्रॉब्लम है कि अगले 2 फाइनेंशियल ईयर में ऑन एन एवरेज जो इंडिया की इकोनॉमी है इट इज गोइंग टू ग्रो बाय अ रेट ऑफ 6.7%. दीज आर 2 पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट रिपोर्ट, जहां हमें ध्यान रखना होगा एज पर द इंडियन इकोनॉमी. Last but not the least is the key points related to World Bank. So World Bank was established in 1944, headquarter Washington DC, number of members that is 189 countries. And what is the primary aim of World Bank? So the primary aim of World Bank is to reduce poverty and support development all over the globe by providing financial and technical assistance, especially to the developing nations. So if next time anyone asks you what is the primary aim of World Bank, so the primary aim of World Bank is to reduce, the primary aim of the World Bank is to reduce poverty. It is to reduce poverty. Along with that, to support the development of developing countries, financial and technical assistance is provided undoubtedly by the same organization, that is World Bank. Is it clear now? Is it clear now? If it is clear, let's move to the next point. The next point over here is related to World Bank, which says in World Bank we have few important institutes which we need to keep in mind. The first institute जिसे हमें याद रखना होगा, दिमाग में रखना होगा, वो है International Bank for Reconstruction and Development, which is a bank which provides loan to the middle income and credit worthy low income countries. Then we have International Development Association, which offers concessional loans and grants to the world's poorest countries. Focus area क्या है? Education, infrastructure, health, agriculture and many more. So remember these points, they are really very important. Got it guys? The news was very simple that according to World Bank, India's GDP growth estimate has increased from 6.6% to 7%, but along with that I have given you the reasons why they have increased the growth estimates. I have given you the areas where Indian economy still needs to look after, or the concerns in the Indian economy, and even I have discussed all the important points related to the World Bank. This is what we call 360-degree coverage of a particular topic which can be asked in your examination. Moving on to the next news. The second news of the day is now on your screen. This news is related to RBI. RBI launches what? That is Unified Lending Interface. I don't know how many of you have heard this point, Unified Lending Interface, but you must have heard and used
UPI, that is Unified Payment Interface. What is UPI? So UPI is a platform where you can make the payments with the help of QR code scan, even with the help of the phone number. And now there is no barrier in terms of, I would say, in terms of bank account or in terms of financial services you are using to transfer the funds. For example, if I have registered myself with PhonePe, I can share the funds, I can send the funds to an individual who do not possess an account or do not registered on PhonePe. Still he or she can receive the funds through UPI in their respective bank accounts. That is the reason we call it as Unified Payment Interface. Now we have one more new term resembling the same, that is Unified Lending Interface. What is Unified Lending Interface? A Unified Lending Interface is a new technology platform which has been introduced by RBI, and it will be introduced across the country pretty soon. What is it? Sir, its main purpose is to basically provide easy and faster loan to the people, especially to those who are residing in the rural areas. So ULI is designed to improve the lending process by lowering the cost and speeding up speeding up how quickly loans are given out. तो ULI बेसिकली है क्या? आप ये समझिए कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, उस प्लेटफॉर्म पर आप रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद अगर आप किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लोन की डिमांड करेंगे तो दे विल नॉट बी आस्किंग फॉर योर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स. दे विल डायरेक्टली चेक योर ULI account, they will check the credentials you have already given on the ULI, and on the ULI itself your entire description will be recorded, and once the description is recorded, then the financial institute can take an easy and quick decision whether आपको लोन दिया जाए या ना दिया जाए. तो अब पेपरलेस लेंडिंग होगी, quick lending होगी, and that too in a fair manner with the help of easy and accurate analysis of the data which is going to be recorded by ULI, that is Unified Lending Interface. Is it clear, everyone? Is it clear? Okay. Moving on to the next point. Sir, if I talk about what is the need of ULI, so ULI की need है इंडिया की. अगर हम बात करें, India is an economy where we still have, I would say, unorganized sectors which are playing their major role in the financial sector. We know many of our individuals, family members who are borrowing or lending loans to the local money lenders. So in order to overcome the barrier and bridge the gap between an individual who wants to borrow a loan but not from unorganized, rather from an organized authority or organization or registered bank or NBFC, that can be possible with the help of ULI. So what is the need of ULI? So ULI, India has been rapidly growing in terms of digital technology, but when it comes to loan, the information needed to assess the person's credit worthiness is often scattered across different systems. इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, they are growing at a very fast rate, but in terms of loan, it's quite tough. In terms of loan, the things are quite tough. We do not get access to the information of an individual so that fast loan, or I would say seamless loan, can be provided. In order to reach or in order to achieve the targets of seamless loan, this initiative has been taken. So this system belongs to various government bodies and financial institutions. Because the information is not in one place, it makes the process of getting loan slow and difficult. So that is the reason ULI has been created, in order to gather all the information together for an individual, and once the information is at one point, you can access the information, you can assess the information, and then you as a financial institute can take a quick and better decision what to lend, how to lend, how much to lend, at what interest rate the lending should be done. All the decisions can be taken easily. So what are the features? So we have easy information sharing. The information which will be stored on ULI can be easily accessed by all the members out there. Standardized API. API here basically means there will be a common software tool
which will allow the different systems to work together so that they can update the information and they can access the information when required. And now there is going to be paperless lending, or very less papers will be required in terms of your credit worthiness records, which can be easily checked through ULI. अब ULI की मदद से आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना, सिबिल जो हम बोलते हैं, सिबिल इज बेसिकली अ स्कोर व्हिच हेल्प अस टू एनालाइज और असेस द इंडिविजुअल्स credit worthiness. Now that credit worthiness can be easily checked through ULI, because your entire information will be stored at one platform, and the moment I enter a PAN card or your Aadhaar card number, I can easily assess your entire history related to the lending, borrowing and returns, and on the basis of which the financial institutes, they can take a decision when to lend, how to lend and how much to lend to the given organization. Is it clear, everyone? So that is the importance of ULI. Remember that ULI is expected to meet the high demand credit, especially for the agriculture and small businesses, and it is seen an important step taken by the country after JAM. JAM was Jan Dhan accounts. A stands for Aadhaar and mobile, where Jan Dhan accounts were linked with your Aadhaar card and mobile numbers. Along with that, we have one more initiative, that is UPI, and now after UPI, we have the other one, that is ULI. I've already discussed what is UPI, so let's move on to the next news. And what is the next news we have? So the next news is MasterCard launches पेमेंट पास की सर्विस इन इंडिया. व्हाट इज इट? आज जब भी कभी आप अपने अकाउंट से पेमेंट करते हैं, इन ऑर्डर टू assure the payment, in order to authenticate the payment, you give your OTP, that is one time password. But there are n number of cases recorded where the fraud has been done. Even there was a feature of OTP, and even there was a feature of biometric confirmations and authentications. उन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए अब इंडिया में भी मास्टरकार्ड हैज लॉन्च्ड अ न्यू फीचर, दैट इज पास की सर्विस. लेट्स अंडरस्टैंड what is this payment pass key service. Payment pass key service is a better system in comparison to that of, I would say, in comparison to that of one time password, that is OTP or biometric authentication. Let's check it out. So MasterCard globally introduced payment pass key service, and it has introduced the same in India as well, in order to enhance your online shopping security as well as convenience. अब क्या हुआ क्या है सर? दिस अनाउंसमेंट वाज मेड ड्यूरिंग अ फिनटेक फेस्ट. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट was recently organized in which city? Your answer is Mumbai. So we have one more question out there in the given news. वो question क्या है? अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 was organized in which city? Your answer will be Mumbai. And this service was initially introduced by JustPay, RazorPay and PayU. Now it has been introduced by MasterCard with all its partner banks as well as the partner organizations. Remember that this authentication is going to replace your traditional passwords and OTPs with more secure fingerprints और facial recognition method. अब क्या होगा कि सर जो आपके वन टाइम OTPs, जिसे हम कहते हैं वन टाइम पासवर्ड, या फिर जिसे हम कहते हैं कि आपके पासवर्ड जो आपने याद किए हुए हैं in order to log in and make the payment, अब उसे रिप्लेस किया जाएगा और उसकी जगह आपके जो बायोमेट्रिक फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल फेस रिकॉग्नाइजेशन, fingerprint scans, they are going to be linked in order to overcome the frauds and issues prevailing in the banking sector. If I give you the data, the service had addressed that there has been 300% increase in online fraud cases in India over the past 2 years, और इन्हीं cases को कम करने के लिए, इन्हीं issues को resolve करने के लिए MasterCard has come up with this initiative. What is this? So this is passkey service. What is basically passkey service? Now you don't need OTP or pre-stored or pre-remembered password. Rather, whenever you will be making a payment, online payment, at that time your biometric features are going to be recognized with the help of the given device, and once the recognition is confirmed, authentication is done, then only you will be allowed to make the payment. That is launched recently by MasterCard in India. Is that clear, everyone? So you can go through with the data which I have for you, and you can go through with each and every point, which is really very important.
moving on to the next news of the day. The next news which I have for you is, I have even added the important points related to MasterCard which you can remember and the questions can be asked in the examination. The next point is, sir, recently RBI has charged penalty on UCO and Cent Bank. So on UCO Bank, penalty has been charged, that is 2.68 crore. Why the penalty was charged? That is violation concerning current account, interest rate on deposit and fraud classifications. So asset classification was done in a wrong manner. There was violation concerns related to the current accounts as well as interest rates on deposits, and simultaneously RBI has charged penalty on Cent Bank Home Finance Limited. Amount of penalty is 2.1 lakh for non-compliance with the KYC regulation. What you need to remember from here is, so you need to remember only one thing, that RBI, being the regulator of the banking sector, has the power to charge penalties on the banks if they are not performing as per the RBI norms or RBI compliances. If not fulfilled, then RBI has the power to charge penalty, and RBI has recently charged penalty on UCO Bank of 2.68 crore and on Cent Bank Home Finance Limited of 2.1 lakh crore. Remember, when UCO Bank was founded, remember its headquarter, and along with that, remember that this bank is owned by government. Even it is government owned bank, still the penalty has been charged. Last but not the least is a news related to India's largest life insurance company. The name is LIC. We know that LIC is government owned life insurance company, and if it is a government owned company, that means the profits which this company is going to earn, that belongs to the government. Simple है ना, अगर मेरी कोई कंपनी है, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उसका प्रॉफिट मेरा ही तो होगा. बिल्कुल उसी तरह अगर गवर्नमेंट owned company है, that is LIC, and if that company is earning profit, obviously that profit belongs to government. In the same manner, RBI is government owned organization. The profits of RBI are also transferred to the government. So recently LIC has paid 3662 crore dividend. What is dividend? So dividend is basically profit given to the shareholder. So whenever you hold shares in a company, then you are liable to enjoy the profits as per your shareholding, and that profit is termed as dividend. So recently LIC has paid 3,662 crore rupees as dividend to the government, because it's a government owned company, and government owned company has earned profit, and its profit belongs to the government. So shareholder approval for final dividend was 6 rupees per share for the financial year 2023-24, which is up from 3 per share in the previous financial year. You can see last year the dividend paid was 3 rupees per share. This financial year the dividend paid is 6 rupees per year. Last year government has received 2,441 crore as dividend. This year government has received 3,662 crore rupees as dividend provided by LIC. Is it clear, everyone? So the total dividend payout, if I say the total dividend payout, which is done in 2 installments, we can say, has come out to be 6,103 crore rupees for the financial year 2023-24. Remember that the Government of India is the majority shareholding. Government of India holds 96.5% majority stake in LIC, and it receives the dividend payment on annual basis. As of March 31, 2024, the LIC asset value was 52.85 लाख करोड़ रुपीस. अगर हमसे कोई पूछे LIC की एसेट वैल्यू क्या है, सर LIC की जो एसेट वैल्यू है दैट इज 52.85 लाख करोड़ रुपीस, एंड कॉर्पोरेशन remains the market leader in terms of life insurance. As I said, it is India's largest life insurance company and it has market share of 64%. यानी कि अगर मार्केट में 100 लाइफ इंश्योरेंस बिकते हैं तो उसमें से 64 लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसीज हैं वो बेची जाती हैं किसके द्वारा? LIC द्वारा. इट इज मार्केट लीडर इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम
income as well as in terms of the number of customer base. So remember, recently LIC has paid the amount. For April to June quarter, financial year 2024-25, LIC has reported a 9% increase in its consolidated net profit, rising to 10,544 crore rupees from 9,635 crores in the same period. So last year, in the first quarter, profit was 9,635 crore, but this time profit value has increased to 10,554 crore rupees, which is important. Remember one more point, net premium income has increased by 16% to 1.14 lakh crores in comparison to 98,755 crores in the first quarter. You can ignore this value. This value is not much important. हाँ, ये value आप याद कर लीजिए. This can help you in writing a good descriptive answer, as well as it will help you to answer the phase 1 direct fact and figure based questions as well. Got it, guys? ये कुछ recent performances हैं of different organizations which I have mentioned. Go through with it and it can help you in answering most of the questions. ये मैंने आपको एक पूरे का पूरा glimpse दे दिया. LIC stands for Life Insurance Corporation of India. कब establish हुई? 1956. Ownership government के पास है 96.5%. And if I talk about the asset value, it is 52.85 lakh crore as of 31st March 2024. Market share is 64% of LIC in the entire life insurance sector of the economy. नेट प्रॉफिट पहले क्वार्टर का कितना था? दैट वाज 10,544 करोड़ रुपए, विच हैज बीन रिसेंटली रिकॉर्डेड. क्लियर जी? आई होप इट इज क्लियर. सो 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया गया प्रीमियम, वो कितना था? सब पहले दिया गया 2400 करोड़, अब दिया गया 3600 करोड़. इन टोटल लगभग 6000 करोड़ का डिविडेंड पेमेंट गवर्नमेंट को दिया गया बाय LIC एज पर द करंट डेटा विच हैज बीन शेयर्ड. लास्ट न्यूज ऑफ द डे, जो कि आपके लिए होमवर्क है, इस न्यूज को पढ़ के आइएगा. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज, सर हम इस न्यूज को कहां से पढ़ें? आज ही आप टेलीग्राम ओपन कीजिएगा, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा माधव अरोड़ा. सिर्फ इतना ही लिखिएगा, माधव अरोड़ा विदाउट स्पेस. जैसे आप माधव अरोड़ा लिखेंगे, @माधव अरोड़ा लिखेंगे, आपको मेरे हैंडल पे लैंड कर जाएंगे, जो कि है इकोनॉमिक्स बाय माधव अरोड़ा. जैसे आप उस हैंडल पे लैंड करेंगे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए. और जैसे ही आप उस चैनल को ज्वाइन करेंगे, द मोमेंट यू विल ज्वाइन दैट चैनल, वहां उस चैनल पर आपको इस सेशन की PDF मिल जाएगी. अगर आप प्लान कर रहे हैं RBI को क्लियर करने का, तो लक्ष्य बैच इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू. Don't plan to just attempt the examination, rather plan to clear the exam, and Lakshya Batch is one-stop solution. Testbook.com पे जाइए, सुपर कोचिंग सेलेक्ट कीजिए. सुपर कोचिंग सेलेक्ट करने के बाद रेगुलेटरी बॉडीज पे जाइए, लक्ष्य बैच सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ के ऑप्शन पे जाइए, माधव कोड यूज कीजिए एंड यू विल एंजॉय मैक्सिमम डिस्काउंट. एनरोल योरसेल्फ राइट नाउ, ताकि इस फाउंडेशन बैच की मदद से यू कैन प्रिपेयर रियली वेरी वेल फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड वी कैन क्लियर दिस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट गो इटसेल्फ. सो आई होप मजा आया होगा. और जो भी आपकी डिमांड है मुझसे इस पर्टिकुलर सेशन में, और किस तरह की न्यूज आप चाहते हैं मैं फाइनेंस करंट अफेयर्स में कवर करूं, कितने समय का सेशन लूं, 1 घंटा या उससे भी ज्यादा, या छोटा सेशन लूं, ये सारे के सारे जो भी आपके सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. आज मेरी पहली क्लास थी, आशा करता हूं चीजें जो मैंने आपको समझाई समझ आई होंगी. इतनी ज्यादा डिटेल्ड PPT मैं आप लोगों के लिए लाया हूं ताकि यू कैन डाउनलोड द PPT फ्रॉम माय हैंडल विच इज इकोनॉमिक्स बाय माधव अरोड़ा. दिस इज माय चैनल्स नेम, हैंडल नेम इज @माधव अरोड़ा. जाइए अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहां पर जाकर अपनी इस पर्टिकुलर PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे लक्ष्य बैच को आज ही ज्वाइन करें इन ऑर्डर टू एश्योर योर सिलेक्शन फॉर द अपकमिंग RBI Grade B 2025 examination. Thank you so much. We'll catch you tomorrow, same time, 6 p.m. when we will be discussing all the important current affairs from RBI which were in news in the past 1 week. RBI की notifications, RBI की press release और RBI की जो important speeches हैं by different members of RBI will be discussed in the tomorrow's session. Thank you so much for joining. We'll catch you soon. Till then, stay home, stay safe, take care. Good luck. God bless you. Bye bye.